Hello, you're watching Hornbill TV's Morning Pulse Bulletin. I'm Naomi Kikon, and here are the news for this hour. The Supreme Court on Wednesday cancelled the bail of gangster Chota Rajan, which was granted to him by the Bombay High Court in October 2024 in the 2001 murder of Jaya Shetty. Rajan, originally known as Rajendra Sadashiv Nikalji, had been convicted and sentenced to serve life imprisonment in the said murder case in May 2024. Subsequently, on appeal, he was granted bail by the High Court. A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta issued a ruling on a plea filed by the Central Bureau of Investigation that had sought cancellation of Chota Ranjan's bail. The additional Solicitor General, S.V. Raju, appearing for CBI, submitted that Rajan has been convicted in 4 cases, which includes 2 murders. The top court also noted that Rajan had been absconding from authorities for a period of 27 years. Ranjan's counsel defended his client's case, claiming that there was no evidence against Rajan in this case. The court was of the view that the accused, Rajan, is a person with multiple convictions, and thus it was not inclined to grant relief to him. India's permanent representative to the United Nations, Ambassador Harish Parvatanini, reaffirmed India's commitment to promote peace, stability and development in the country. Addressing the UN Security Council quarterly briefing on Afghanistan, Ambassador Parvatanini emphasized India's priorities to provide humanitarian assistance and implement capacity-building initiatives for the Afghan people. He also reaffirmed India's commitment to the UN assistance mission in Afghanistan. Ambassador Parvatanini expressed gratitude to Special Representative of the Secretary General and Head of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Rosa Otunbayeva, for her briefing. Additionally, Ambassador Parvatanini highlighted India's assistance efforts when an earthquake of 6.0 magnitude struck Afghanistan. Mr. President, in the aftermath of the earthquake earlier this month, India was among the first countries to provide humanitarian assistance. We immediately delivered 1,000 family tents and 15 tons of food supplies to the affected provinces of Afghanistan. An additional 21 tons of relief materials, including essential medicines, hygiene kits, blankets and generators, were dispatched. More relief supplies are underway and will be delivered in the coming days. This humanitarian assistance dovetails with India's support since August 2021, during which we have supplied around 50,000 tons of wheat, over 330 tons of medicines and vaccinations, 40,000 liters of pesticides and other essential social support items for millions of Afghans in dire need of humanitarian assistance. In partnership with the UN Office on Drugs and Crime, we have provided 84 metric tons of assistance and medicines, 32 metric tons of social support items for drug rehabilitation programs, particularly those focused on women. India's scholarships and fellowships to Afghan students since 2023 total over 2,000 such undergraduate and postgraduate scholarships, including nearly 600 for girls and women. Mr. President, India is closely monitoring. Mr. President, I thank you for convening today's meeting. I thank SRSG and Head of UNAMA, Ms. Rosa Otunbayeva, for her briefing. Being her last in this current capacity, I'd like to place on record my delegation's sincere appreciation for leading this agency with distinction. We value her close cooperation and hope to carry forward the same with UNAMA in the future. Our delegation also notes the comments made by Ms. Hanifa Girowal. India and Afghanistan share a civilizational relationship. Being contiguous neighbors, our bonds of friendship span many centuries, and this history inspires us to foster closer engagement with the Afghan people. India has a paramount interest in ensuring peace and stability in Afghanistan. We believe in the utmost importance of international and regional consensus and cooperation on key issues concerning Afghanistan and actively engage with all relevant parties to promote peace, stability and development in the country. Our participation in UN meetings in Doha and other regional forums reflects our efforts. India's immediate priorities in Afghanistan include provision of humanitarian assistance and implementation of capacity-building initiatives for the Afghan people. India's commitment to Afghanistan's reconstruction is demonstrated through more than 500 development partnership projects across all provinces.
Our work with UN agencies in critical areas such as health, food security, education, and sports is also the manifestation of this goal. Monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with those who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. On the political front, India's External Affairs Minister has spoken twice with the acting Foreign Minister of Afghanistan. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April 2025 by the Afghan side. Mr. President, any coherent policy to address a post-conflict situation must combine incentivizing positive behavior and disincentivizing harmful actions. Focusing only on punitive measures is unlikely to meet desired results. The United Nations and the international community has adopted more nuanced approaches in other post-conflict contexts. Afghanistan needs a fresh approach, with hitherto unused policy instruments to support its people who are in such a dire need. A business-as-usual approach is only expected to maintain the status quo, which is not good for Afghanistan and unlikely to meet the expectations of the international community for the people of Afghanistan. After more than 4 years of living under a sanctioned regime, the Afghan people have not seen much scope for enhanced development assistance and cooperation. The most unfortunate earthquake has made the situation even more dire. This is the time for compassion, a time for lending a helping hand to millions of Afghans suffering under the yoke of poverty, disease, and hunger. In conclusion, I'd like to reiterate that our commitment to meeting developmental needs of the people of Afghanistan is non-negotiable. We will continue engaging with all relevant stakeholders and broadly support the international community's efforts towards a stable, peaceful, and prosperous Afghanistan. I thank you, Mr. President. Congress MP Karti Chidambaram on Wednesday urged the Election Commission to look into the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi's claim of vote theft instead of dismissing the allegation. The Congress MP claimed that a significant number of legitimate voters were being deleted, while a substantial number of fictitious voters were being added. Rahul Gandhi is continuously saying on it, and even in Tamil Nadu also the signature campaign has moved on. What do you wanted to say on this? See, he is raising some very legitimate questions. The voter list is seriously suspect. If you had looked at the Madhepura constituency in Karnataka, Bangalore, you would have realized that in one address, there are more than 68 people the election commission is claiming are dwelling there. And people have some very ridiculous names as their father's names with like typos. So the electoral list is suspect, and he's been pointing that out with the data. And it is incumbent upon the election commission to address it instead of dismissing it summarily. So whether addition of names, that is suspect, and deletion of names is also suspect. A lot of legitimate voters are getting deleted and a lot of fictitious voters are getting added, and both are suspect. And I think Rahul Gandhi is correct in pointing that out, and people must be vigilant, because if the electoral list is wrong, then the entire election result can be wrong. Then democracy is undermined. So we must be very careful about it, and it is very good that we are taking this effort to educate the people about the risks of having a faulty electoral roll. Meanwhile, the Congress MP has also alleged that the opposition party in Tamil Nadu, AIADMK, had lost its independence and become a wholly owned subsidiary of the BJP. Even for any small internal problem, they will have to run to Delhi for arbitration. That very clearly shows that they have lost their independence, and the people of Tamil Nadu have lost confidence in them because they don't behave like an independent political party anymore, he added. See, the Anna DMK, a powerful political party and a legacied political party in Tamil Nadu, unfortunately has lost his independence. It is now a wholly owned subsidiary of the BJP. Even for any small internal problem, they'll have to run to Delhi for arbitration. That very clearly shows that they have lost their independence, and the people of Tamil Nadu have lost confidence in them because they don't behave like an independent political party anymore. Mainly yesterday holding the kerchief in the No, I don't know. Maybe the Delhi air was polluted. So maybe he was holding the kerchief. Because Delhi air is polluted, maybe to keep away the pollution, he must have been holding the kerchief.
UP Additional Director General of Law and Order, Amitabh Yash, stated on Wednesday that the aim of the Goldie Brar gang, who fired outside Bollywood actress Disha Patani's residence in Bareilly, was to spread fear among the public in the state. ADG Yash stated that the incident occurred on September 12 at around 3:45 a.m. when two bike-borne men fired multiple rounds outside the actress's ancestral home in Civil Lines, Bareilly. On Wednesday, the two accused involved in the firing succumbed to injuries following an encounter in a joint operation by Delhi Police and UB STF in Ghaziabad. Ravinda, also known as Gulu, and Arun, affiliated with notorious gangsters Goldie Brar and Rohit Katara, were injured during the encounter near the Tronika city area of Ghaziabad and later succumbed to injuries. The ADG also informed that the one constable of the Haryana police was shot in the chest during the encounter. 12 सितंबर को सुबह लगभग 3:45 बजे दिशा पटानी घर पर दो अपराधियों ने फायरिंग की थी। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस प्रकार के जनता में खौफ पैदा करने वाले अपराधियों को तत्काल कानून के दायरे में लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। इसी नीति के तहत कार्य करते हुए तत्काल यूपी पुलिस ने एसटीएफ जनपदीय पुलिस को सक्रिय किया और कई स्तर पर अभिसूचना का संकलन किया गया। आसपास के आने जाने वाले रूट्स पर सीसीटीवी फुटेजेस निकाले गए, धरातल पर अभिसूचना संकलन किया गया, तकनीकी विश्लेषण किए गए, साथ ही आसपास के अन्य प्रदेशों में भी जो क्राइम रिकॉर्ड्स थे उनके क्राइम ब्रांच से प्राप्त कर फोटोग्राफ्स की मैचिंग कराई गई और इन अपराधियों को पहचाना गया। इनकी पहचान रविंद्र और अरुण के रूप में हुई। इसके अलावा ये भी जानकारी हुई कि दो अन्य अपराधियों को रेकी के लिए इस्तेमाल किया गया था, उनकी ही पहचान कर ली गई है। फायर करने वाले इन दो अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी ब्रार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी ब्रार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी, जो सभी मीडिया चैनल्स द्वारा दिखाई भी गई थी। एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये दो शूटर्स मार गिराए गए हैं। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल के छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से दो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस गैंग के सभी छोरों की, इसके सारे मेंबर्स की जानकारी भी की जा रही है, ताकि संपूर्ण गैंग पर एक्शन लिया जा सके। सर, क्या ये गोल्डी बरार के सक्रिय सदस्य थे? इनको पैसे देके काम कराया गया था, कैसे? यह गैंग गोल्डी बरार के लिए काम करता था। गोल्डी बरार और रोहित गोधारा ये एक ग्रुप है। गोल्डी कनाडा से सक्रिय है और रोहित गोधारा जो है वो उसके पोर्टुगाल में होने की जानकारी हुई है। इन्हीं का एक गैंग मेंबर लुपिन नेहरा, उसके भी पोर्टुगल में होने की जानकारी है, द्वारा ये ग्रुप संचालित किया जा रहा था और ये निर्देश दिए गए थे। इनका मकसद था कि ये जनता में खौफ पैदा करें, जिससे ये फिर आगे अपने गैंग की एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश में फैला सकें और यहाँ भी वसूली आदि कर सकें। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आज की इस कार्रवाई के बाद ये गैंग्स उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करने नहीं करेंगे।
सर क्या दिशा पटानी को भी इनके माध्यम से धमकी वगैरह कुछ दिया गया था? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है उससे ये जानकारी मिलती है कि इनके द्वारा खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी ताकि इनके गैंग का खौफ यूपी में भी फैल सके। सर इनके पास इंटरनेशनल हथियार जो बरामद हुए हैं, क्या लगता है भारत में इंटरनेशनल हथियार बैन है लेकिन फिर भी इनको कहां से मिल रहा है? इस प्रकार के हथियार इस तरह के ऑर्गेनाइज गैंग से पास अक्सर देखे जाते हैं। इस पर भी पूरी जानकारी की जाएगी कि ये हथियार कहां से आए हैं, ये कारतूस कहां से प्राप्त हुए हैं, ताकि इन स्रोतों। We'll be right back after a short break, so stay tuned. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। Welcome back. 12 Naxals, including 5 women carrying a total bounty of Rs 18 lakhs, surrendered before the police in Chhattisgarh's Narayanpur district. 12 Naxals carrying a total bounty of Rs 18 lakhs have surrendered on Wednesday. The 12 Naxals include 5 women and 7 men. 2 of them were ECM's Indian Naxal outfit in Indravati and East Bastar areas, Narayanpur Superintendent of Police Robinson Guria said. The SP stated that under the surrender policy, the surrendered Naxals are given Rs 50,000 cash each and their identification documents are made so that they get the benefits of government schemes. According to Narayanpur SP Guria, one of the surrendered Naxals belonged to Platoon 16, whose commander was neutralized in the last operation. The SP stated that the Naxals surrendered due to the government's surrender policy and increasing pressure from ongoing anti-Naxal operations. माओवादियों ने सरेंडर किया है और कितने लाख के इनाम? आज कुल 12 माओवादियों ने सरेंडर किया है और ये कुल 18 लाख के नामी है, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं और ये अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत थे अपने नक्सल संगठन में। इसमें मुख्य रूप से 2 ECM हैं जो इंद्रावती क्षेत्र में और ईस्ट बस्तर क्षेत्र में कार्यरत थे और प्लेटून 16 की एक PPC है जो जिनका कमांडर को भी लास्ट ऑपरेशन में हमने न्यूट्रलाइज किया था। सरेंडर नक्सलियों ने क्या कुछ खुलासे किए? सरेंडर नक्सलियों के द्वारा यह बताया गया है कि मानसून में भी ऑपरेशंस का जिस प्रकार से दबाव है, मार क्षेत्र को उनको भी क्लियर है कि पुलिस ऑपरेशंस करती रहेगी और नए कैंप्स खुलते जाएंगे, तो एक वो प्रेशर है और फिर जो नई सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उससे भी आकर्षित होकर बाहर आ रहे हैं। 2025 में कुल कितने माओवादियों ने लगभग सरेंडर किया है और इसमें कितने बड़े माओवादी कैडर होंगे? अभी तक टोटल 2026 में 177 नक्सल्स ने सरेंडर किया है, जिसमें से अराउंड 5 to 10% टॉप कार्डर्स हैं। सर क्या लगातार जो है अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा मानसून के बाद? हाँ, अभी मानसून लास्ट लेग में है और ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है एंड देन आगे भी चलता रहेगा। ऑपरेशन से सर किस तरीके का प्रभाव जो है वो माओवादी संगठन को पड़ रहा है, वो किस तरीके से दबाव है? ऑपरेशंस के होने से एक तरीके का जो जान का डर है और फिर उनको ये भी पता है कि बड़े संगठन के जो लीडर्स हैं वो मार छोड़ के जा चुके हैं और जो मिड कार्डर है या फिर लोअर कार्डर है वो अपने मौत का डर उनको भी सताता है और वो इसलिए भी सरेंडर कर रहा है।
सर प्रशासन की कौन सी नीति के तहत जो है किस तरीके का जो बेनिफिट्स है वो अब मिलेगा सरेंडर माओवादी? जो नई सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट की उसमें तत्काल में 50,000 रुपये की राशि है और साथ में जितने भी इनामी नक्सली है उनका वो अमाउंट उनको मिलता है। और फिर साथ में जो गवर्नमेंट की जो बुक ऑफ स्कीम्स है जिसमें उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनका वोटर ID, ये सब के साथ जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी है वो सभी मिलेंगी। The Amritsar Commissionerate Police has arrested a man with 7 kg of 122 grams of heroin. The arrested, identified as Yasin Mohammed, is a known smuggler who has 4 prior cases under the NDPS Arms Act and snatching, said to police. Investigation revealed that Jakpreet Yasin's accomplice from their time together in Ludhiana jail in 2023 to 24 is involved in the drug cartel. The consignment was picked up from the Anjnala sector. Yasin's interrogation indicated this was their third or fourth consignment. They operated by establishing points near the Tarn-Taran border for handover, with Jakpreet distributing the drugs in the Malwa area, Amritsar CP Gurpreet Singh Pula added. The Commissioner of Police has said that the police have started the operation to nab Jakpreet, Yasin's accomplice, a notorious smuggler and criminal with 4 cases under the NDPS and Arms Act in Firozpur, Ludhiana. माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो युद्ध नशे विरुद्ध कैंपेन है उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 7 kg 122 ग्राम हेरोइन हमने रिकवर की है और यासीन मोहम्मद एक नॉन स्मगलर है, उसको पकड़ा जो कि पीछे संबलपुर यूपी का रहने वाला है और आजकल फिलहाल वो लालड़ू मोहाली में रह रहा है। उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे पहले दर्ज हैं NDPS, आर्म्स एक्ट और स्नैचिंग के। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जगप्रीत इसका एक साथी है, क्योंकि दोनों 2023-24 में लुधियाना जेल में इकट्ठे रहे। वहां से इन्होंने अपना ये सारा कार्टल बनाया और उसके काम कर रहे हैं। ये कंसाइनमेंट इन्होंने अजनाला सेक्टर से पिकअप की थी और जो यासीन की पूछताछ हुई है उससे ये बात सामने आई कि ये तीसरा और चौथी कंसाइनमेंट है इनकी। और हरिका एरिया जो है तरन तारण के बॉर्डर पे, वहां जाके कोई ना कोई रॉन्डेवू पॉइंट बना के ये हैंडओवर करता था। और जगप्रीत जो है ज्यादा मालवा एरिया में एक्टिव होके वहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी। जगप्रीत भी एक नोटोरियस स्मगलर और क्रिमिनल है पुराना, जो रिकॉर्ड से हमें पता लगा उसके खिलाफ भी 4 केसेस दर्ज हैं NDPS के हैं, आर्म्स एक्ट में, फिरोजपुर, लुधियाना, खन्ना, इस एरिया में काफी एक्टिव रहा है। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में और भी हमें इन्वेस्टिगेशन में लीड्स मिलेंगी और जगप्रीत के पकड़े जाने पे सारा नेटवर्क स्मैश किया जाएगा। बहुत सारी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिली है हमें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं सो दैट फाइनेंशियल एंगल, लिंकेजेस सारे हम एस्टेब्लिश करके उनको स्मैश कर सकें। देखो तो होता ही, आपको पता ही है, कैट एंड माउस गेम है। तो छुपा के या इतना हमारा वास्ट बॉर्डर है, बहुत लंबा है और ऊपर से इतनी फ्लड्स की जो वहाँ प्रकोप हुआ है उसके रहते हुए लोग भी और सारे चीजें एक बार हिट तो हुई हैं। वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं, वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, बिकॉज जगप्रीत के पकड़ा जाना हमारे लिए पहले बहुत क्रूशियल है। 6 people died in a terrible road accident near Paraman in the Sangam Mandal of the Nellore district on Wednesday when a tipper lorry collided with a car on the national highway. According to reports, the collision was so severe that the car was completely crushed under the massive tipper and had to be pulled out with the help of a JCB. All 6 occupants of the car died on the spot despite rescue efforts by police and the fire personnel. The victims were travelling from Nellore to Pamuru to visit an ailing relative when the accident occurred. The deceased have been identified as T. Rata, 38, T. Srinivasulu, 40, Shesham Sarama, 40, Palavekaya, 45, Chalangutla Lakshmi, 30, and Chandu Priya, 15. Authorities said the impact left the body severely mutilated. With great difficulty, the remains were extricated from the mangled car and shifted to the mortuary at Atmakur Government Hospital. Grief-stricken family members broke down upon seeing the remains of their loved ones. A major accident occurred between Sangam and Atmakur near
Karamana. One car coming from Nellore, which is going to Atmakur with 6 passengers, and a tipper lorry, both collided, and this accident happened today, and 6 members died on the spot. The vehicle is a brand new vehicle, tipper, so all the records are in force, and road is also straight road. So we preliminarily we assume that this accident has happened because of the rash and negligence driving of the driver of the tipper. That's all for now. Keep watching Hornbill TV. अरे रास्ता सही नहीं बिरामी ना रास्ता तो सही ना बिरासी तो मनु के सभी ना से लगे से अच्छा रुकी तभी जब मैं एक्टिव स्टॉप जी एकेडमी में पत चाहिए वो रुकी तभी दे तो पुलाई से बोले तो बोई कैसे दे एक्टिव स्टॉप जी एकेडमी আছে ওই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ अच्छा ट्यूशन को बोले अच्छा मैं ये तो स्टेशन नामक अपने कोई दो है 3 days later अदोना अम्मा गौरी दाना कोले मत येसो अपनी ये के लिए किताब पढ़े से लाइब्रेरी আছে তো ना होने वाला जुड़ा कोई दी ना लाइब्रेरी আছে ओ तो अपनी तो ये के लिए किताब पढ़े से गोड़ भी जगह से हुए आया याते मान शांति कूल ब्रा बय আছে सेंट्रल एसी আছে তো लोकर्स काम দিয়ে সব আছে तो ভালো আছে তো फ्री ना কিনে আছে তো নাই ফ্রি তো নহয় will be very reasonable admission fee 1500 আছে আৰু monthly fee 1200 तो मैं भी ज्वाइन करूँ नहीं के ज्वाइन करो बोले कुछ भी डिस्टर्ब ना दीजिए जरे अच्छा थैंक्स दे And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. In depth and straight to the point because the truth deserves clarity.